now the next important topic that we'll be talking about is megasporogenesis. Now first let's break this down, right? What are we talking about? We are talking about megasporogenesis. ठीक है, देखो जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, राइट? जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन and we are talking about formation of megaspore, of course. So very simple, megasporogenesis क्या हुआ? Formation of megaspores. Now we are going to understand the entire process. Formation of megaspores is called as megasporogenesis. Now see, initially all the cells of the new cell is they are undifferentiated, homogeneous and meristematic. ठीक है, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है. हम लोगों ने देखा था न्यू सेल्स क्या था, देखो ओव्यूल बनाया था, उसके अंदर एम्ब्रियो सैक था, एंड हियर surrounding the embryo sac what was present? New cell was present, right? We had seen the diagram of a mature ovule. अब हम formation की बात करें कि ये story कहाँ से start हुई, right? So story started from here that initially all the cells of new cells, हम new cells के बारे में बात करें, they are undifferentiated, meristematic है, homogeneous है. अब देखो same story repeat होगी. This mass of the cells is surrounded by a single cell thick layer of epidermis. याद करो सेम स्टोरी हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी पढ़ी थी, ठीक है? वहां पे भी हम लोगों ने कुछ ऐसी ही बातें करी थी, राइट? सो दिस मास ऑफ सेल्स इज सराउंडेड बाय सिंगल सेल थिक लेयर ऑफ एपिडर्मिस एंड एनी वन ऑफ द हाइपोडर्मल सेल्स ऑफ द न्यू सेल इज, ठीक है? कोई भी एक हाइपोडर्मल सेल होगा. सपोज दीज आर माय सेल्स ऑफ न्यू सेल इज, right? This is the epidermis. यहाँ से कोई भी एक cell, it is going to become prominent. The cytoplasm is going to become dense and it will start acting as archisporial cell. वो किसकी तरह act करेगा? It is going to act as archisporial cell. So any one hypodermal cell of new cell is differentiated and increases in size. It becomes different from the rest of the cells due to presence of distinct nucleus. The nucleus is going to become prominent and it is called as archisporial cell. Okay, moving forward, the archisporium, it divides periclinally. ठीक है, ये मेरा archisporial है, ये periclinal division हो गया, right? We had seen what periclinal and anticlinal divisions are. So this is my archisporial cell, this is the periclinal division. तो अब यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे भी वही cells बनेंगे. We are going to get a primary parietal cell, ठीक है? ऊपर वाला outer primary parietal cell and the inner is primary sporogenous cell, ठीक है? ये क्या मिल गया? Primary sporogenous cell मिल गया, right? So that is what is written here. Archisporium divides periclinally to form an outer primary parietal cell and inner primary sporogenous cell. Right? Now moving forward, the primary sporogenous cell directly acts as megaspore mother cell. देखो जब हम pollen grains के बारे में बात कर रहे थे तब हम when we were talking about the male parts of the flower, the term that we were using was microspore, ठीक है? वहाँ पे भी हमने एक ऐसे mother cell की बात करी थी which was microspore mother cell. Now here we are talking about female, we are going to be using the term megaspore. So now here which mother cell is present? It's the megaspore mother cell. So now megaspore mother cell, the primary sporogenous cell is going to directly act as megaspore mother cell. It is going to divide meiotically to form 4 haploid megaspore. ठीक है, मेरे पास आ गया MMC again. What is this MMC here? In this case, this MMC is megaspore mother cell. ठीक है, ये MMC क्या है? मेगास्पोर मदर सेल है. एंड दिस MMC it undergoes meiosis. Okay, this MMC it undergoes meiosis, and of course we know as a result of meiosis how many daughter cells we get? We get 4 daughter cells, right? तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएंगे?
4 मेगास्पोर्स मिल जाएंगे. वी आर गोइंग टू गेट 4 मेगास्पोर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लॉइडी. ठीक है, इनकी प्लॉइडी क्या होगी वो देखते हैं. तो ऑफ कोर्स मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पे डिप्लॉइड होगा. मियोसिस हुआ है, देन व्हाट विल बी द प्लॉइडी? हैप्लॉइड. दे आर ऑल व्हाट? दे आर ऑल haploid. They are all haploid. Okay, so the primary sporogenous cell directly acts as megaspore mother cell. It divides meiotically to form 4 haploid megaspores. The 4 haploid megaspores generally arranged in a linear tetrad. Generally the lowermost or the chalazial megaspore remains functional. अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है. देखो, जब हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात करी थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल में भी मियोसिस हो रहा था एंड इट वाज फॉर्मिंग अ टेट्राड. इट वाज फॉर्मिंग 4 माइक्रोस्पोर्स, राइट. ऑल द 4 माइक्रोस्पोर्स दे वर डेवलपिंग इनटू द पॉलन ग्रेन. यहाँ पे स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है. यहाँ पे देखो, बने 4 हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मियोसिस विच इज हैपनिंग इन मेगास्पोर मदर सेल, वी हैव गॉट 4 मेगास्पोर्स बट ओनली 1 रिमेन फंक्शनल. ठीक है, सिर्फ एक ही फंक्शनल रहता है. जनरली द लोअर मोस्ट और द चलाजल मेगास्पोर, जो ऊपर के 3 हैं वो सब डीजेनरेट हो जाएंगे. Okay, so generally the lowermost or the chalazal megaspore remains functional out of the tetrad of megaspore and the other 3 which are lying towards the micropyle. अब ये ends याद करना बहुत important है. कौन सा फंक्शनल रहता है, कौन सा डीजेनरेट हो जाता है. देखो, सपोज करो these are the 4 megaspores. This is the micropyle end or the micropylar end. Now here what is happening? These 3, 1 2 3, इनका क्या हो रहा है? इनका degeneration हो रहा है. They are getting degenerated. Okay, they are getting degenerated. Only 1 megaspore is remaining functional and it is present as at chalazal end. ठीक है, जो चलाजल एंड पे मेगास्पोर प्रेजेंट है दैट इज द वन दैट इज गोइंग टू स्टे फंक्शनल. बाकी सारे जो है वो डीजेनरेट हो जाएंगे. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ दिस फंक्शनल मेगास्पोर व्हाट विल इट प्रोड्यूस? It is going to produce your female gametophyte. And what is the female gametophyte? Our embryo sac. ठीक है, क्या है? एम्ब्रियो सैक है, राइट. यहाँ पे देखो, सेम स्टोरी. एपिडर्मिस है, आर्कीस्पोरियल सेल. एक सेल जो है इट हैज बिकम प्रोमिनेंट, न्यूक्लियस हैज बिकम प्रोमिनेंट, साइटोप्लाज्म हैज बिकम डेंस. इट इज एक्टिंग एज आर्कीस्पोरियल सेल. डिविजन हुआ उसके अंदर, पेरिक्लाइनल डिविजन हुआ. देन इट इज गोइंग टू फॉर्म प्राइमरी पेराइटल सेल टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल टुवर्ड्स द सेंटर. And here the primary sporogenous cell directly acts as megaspore mother cell. बहुत important point है. ठीक है, megaspore mother cell क्या करेगी? It is going to undergo meiosis. We are going to get a tetrad of megaspores. अब यहाँ पे देखो, 3 megaspores जो है वो degenerate हो गए हैं. And on which end are these 3 megaspores present? Micropyle. ओके, माइक्रोपाइल. और एक मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल रहेगा एंड दिस फंक्शनल मेगास्पोर इज गोइंग टू डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट विच इज द एम्ब्रियो सैक. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? एम्ब्रियो सैक बोलेंगे. ऑलराइट, नाउ सी megasporogenesis. We've already seen formation of megaspores is termed as megasporogenesis. Megaspores are formed inside megasporangium, right? कहाँ पे बन रहे हैं? ओव्यूल के अंदर बन रहे हैं. So megaspores are formed inside megasporangium. Now see here, the MMC is a large cell with dense cytoplasm and prominent nucleus. It undergoes meiosis and it forms 4 haploid megaspore. Megaspore का tetrad बन जाएगा. Right? Now one of these megaspores they develop into the female gametophyte and the other megaspores degenerate. Same story, 3 degenerate हो जाएंगे and we will be left with 1
functional megaspore, right? Only the basal megaspore remains functional. देखो basal term आ रहा है, chalazion, okay? chalazion. तो जो megaspore chalazion end के towards है, that is the one that is going to remain functional and it is going to develop into the female gametophyte, your embryo sac. All right, this process of formation of embryo sac from single megaspore, right? अभी हम लोगों ने देखा था 3 megaspores were degenerating, 1 was functional. So the term that we are using here is monosporic development. Mono matlab 1. Okay, so the entire female gametophyte, entire embryo sac is developing from 1 megaspore. So that's why the term that we are using is monosporic development. Okay, see here, right? This is the megaspore mother cell. Megaspore mother cell यहाँ पे died हो गया, two cell stage आया हम लोगों को, and then we are getting megaspore tetrad, 4 megaspores as a result of meiosis in megaspore mother cell. So following changes lead to monosporic development. Nucleus undergoes mitotic division. Okay, two nucleate embryo sac is formed. Next, nuclei undergo mitotic division again. 4 nucleate embryo sac is formed and nuclei undergo